Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class first year, Assalamu alaikum. Today we have unit number 1 from your new book, Complex Numbers. Exercise 1.1, question number 1, simplify. Part first, iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. Now to simplify it, we will take common iota raised to power 9. आयोटा 9 कॉमन क्यों ले रहे हैं? इन दोनों में से जो छोटी वाली पावर है वो क्या है? आयोटा 9. तो आयोटा 9 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. सो इट विल बिकम्स 1. आयोटा 9 बाहर आ गया, यहाँ 1 रह गया, प्लस यहाँ से आयोटा 9 कॉमन आ गया तो बाकी कितनी पावर्स रह जाती हैं? 10. आयोटा 10 विल बी लेफ्ट. सो हियर 1 प्लस. अब हमने क्या करना है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1. मीन्स वी हैव ओनली द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1. सो वी विल कन्वर्ट आयोटा रेज टू पावर 10 इनटू मल्टीपल ऑफ 2. हाउ? एज वी नो दैट 10 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 2 into 5 gives 10. So we will convert iota 10 into iota square. How? We will write iota square whole raised to power 5. Now since iota square equals to -1, so we will put -1 here over. It will becomes -1 raised to power 5. 1. अब हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर आड है तो वो क्या होता है? नेगेटिव ही होता है. तो -1 मिल जाएगा. तो हमारे पास 1 - 1 0. 0 multiply by iota 9 gives 0. So required answer is 0, or the simplified form of iota raised to power 9 plus iota raised to power 19 is 0. Now part third, -1 raised to power -23 by 2. अब डायरेक्टली -23/2 को हम 2 के मल्टीपल में या कुछ इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकते कि आयोटा में कन्वर्ट होकर हमें कोई स्पेसिफिक सिंप्लीफिकेशन दे सके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए ये पावर 1/2 को सेपरेट करेंगे, पावर -23 को सेपरेट कर लेंगे. तो अब हमारे पास -1 रेज टू पावर 1/2 पावर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 और यहाँ से -23 एज इट इज़. नाउ एज वी नो दैट इफ़ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 देन आयोटा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट. तो अब ये हमारे पास -1 स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिख लेंगे? आयोटा होल रेज टू पावर -23. इट कैन बी रिटन एज 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 23. पावर नेगेटिव है, नीचे जाएगी हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. नाउ वी विल write it in the form of iota square or to convert into an even number. How we will write even power? How we will write iota into iota raised to power 22. क्योंकि 23 को डायरेक्ट 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो उसको लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 22. आयोटा वही है. आयोटा 22 को हम कन्वर्ट करेंगे आयोटा स्क्वायर में, तो कैसे करेंगे? आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 11 बिकॉज 11 2s are 22. Now as we know that value of iota square is -1, so it will becomes 1 by iota into -1 raised to power 11. Again when power odd power of negative number gives negative, so it will becomes minus iota. Now to simplify further, 1 divided by minus iota, we will multiplying and dividing by plus iota. Why? Conjugate of this minus iota is plus iota. कंजुगेट में क्या होता है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आयोटा वाली साथ टर्म के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं. यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो वी विल मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ माइनस आयोटा, दैट इज़ आयोटा. आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है. 1 इंटू आयोटा गिव्स आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा गिव्स माइनस आयोटा स्क्वायर. अगेन द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. माइनस माइनस प्लस. आयोटा डिवाइडेड बाय 1 गिव्स आयोटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 of same exercise 1.1. Prove that iota raised to power 107 plus iota raised to power 112 plus iota raised to power 122
or 102 plus iota raised to power 153 equals to 0. Taking left hand side, which is equals to iota raised to power 107 plus iota raised to power 112 plus iota raised to power 122 plus iota raised to power 153. Now to prove it equals to 0, first of all we will take common the least power among these, which is 107. So we will take common iota raised to power 107. इन सब में से जो सबसे छोटी वाली पावर है वो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. अब बचेगा क्या, when iota raised to power 107 is common, then only 1 is left, plus iota raised to power 107 common, 112 minus 107 5, 122 minus 107 15, 153 minus 107 46. Now 1 plus iota 5 को हम लिखेंगे iota into iota 4, because we have only the value of iota square. तो स्केयर में लिखने के लिए आर्ट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको कन्वर्ट करेंगे नियरेस्ट इवन में. तो वो हमारे पास 5 को किस तरह लिखेंगे, iota into iota 4. Similarly, writing iota 15 as iota into iota 14 to convert into iota square. And here iota 46 is power is even, so directly we can write the multiple of 2, how, iota square whole raised to power 23. Now 1 plus iota 4 can be written as iota square whole square plus iota 14 can be written as iota square whole 7, and here the value of iota square is, as we know that its value is minus 1, so we will write minus 1 raised to power 23. Now here 1 plus iota, writing iota square minus 1 again, plus iota square minus 1, and minus 1 raised to power 23 gives minus 1, so this plus 1 and minus 1 will be cancel out, and we have left hand side equals to iota raised to power 107. Now minus 1 square gives plus 1, so we have only iota. Minus 1 raised to power 7 gives minus 1, so minus 1 into iota gives minus iota. Iota minus iota 0. Iota raised to power 107 into 0 gives 0, which is required right hand side.